So hello guys, we are live now. Let me post in channel so everyone can join. Okay, so we are live now and we will start with our today's analysis with gold. In previous time we have already talked about how gold is bullish and why are we watching gold for more upside. Now today we will analyze it and watch for next swing entries. So first of all, we will start with our weekly analysis. So in weekly time frame, we already have this breakout structure and price is rising continuously. And as we can see, after breaking of this high, we have the continuous break of this high. And the previous week candle closed above the highest one. So this is currently a bullish scenario and this is our new range of weekly time frame. So a possible wick below is there and we can see this move. So this is a possible scenario according to weekly time frame. Is gold want to go more upside? And if we see this in daily time frame, this is the same range in daily time frame, but the range is starting from here. So this is our daily time frame range and this is our weekly high. So until we have a close back above in daily time frame, that's why I told you guys that gold will try to close a weekly candle below this 3646 and price is doing exactly what we were expecting. So we can expect a rejection here and my target will be this weekly and daily time frame low. Below this low we have this massive order block here. So price can sweep this low, test this area and it will continue its bullish momentum. And what can we expect here? Let's say in 4-hour time frame. In 4-hour time frame we have this equal high in trendy momentum. This is our equal high. This was our QML area and this is our equal high from where price is again rejecting. And if we see this was just a liquidity hunt. So possible it can hunt a liquidity. Once a one side liquidity is hunted, price need another liquidity to run back towards this side again. So one liquidity was here and one was at this one here, this level. This is a inducement level. So if you see this inducement level in 1-hour time frame, you will see a relative equal highs. After breaking below this again, price is consolidating right now. So at this level, what I see? I saw a breakout structure in 1-hour time frame. Then price is rejecting from its extreme zones. This was our change of character. This was our final breakout structure to the upside. After closing 2 candles below it, this is our breakout structure.
So after one we have a break of structure toward the downside. This is our change of character. Now price have changed its character in 1 hour time frame, and then we have this low. Price try to close above, but it rejected from this QML area. Again close a candle below this previous low, which is confirming a downtrend. So here you can see this price created a lower low, lower high, again lower low, and again creating a lower high. So once again price create a new lower low, the trend will be confirmed in downtrend. Then after we can expect price to sweep this low in daily time frame, test out this areas, and then we will expect this one. It is possible that price again test this area, because this is our static resistance right now, and price can reject multiple times from here. So according to my analysis, I'm expecting price to drop more downside, and my target will be first this 3600, and second will be this daily time frame low around 3579. So let's analyze it in more smaller time frame and create some trade opportunity. If you see this here, we have the same scenario we are having in 4 hour time frame. A static resistance here, which is forcing gold to downside. This is our static resistance, which is forcing gold to downside from the same area. See this, a first rejection, which is this one, and this is second rejection, which is this one. So this kind of price action can continue in bigger time frame too. Once price break below this low, you can short on retest. This will be your new short entry for the target of 3613. This will be your target once price break below this low and retest it. Before that, price is just in range here. You can target upper high if price bounce from here again, and once we have a liquidity hunt above this equal high and again close back below like this one, if price do something like this, again pump from here, sweep this high, this relative equal highs, again we have a change of character below this low, doesn't close a 2 candle above this high in 1 hour time frame, and we have the change of character below this low, then on the retest you can straightly target first this low, second this two areas. So this will be your 3 TP target trade if we have this liquidity hunt. So we have two scenario here for the bearish targets. First is directly break down below this low, which will be like this, and second is this sweep. Okay, now let's talk about the third scenario, which is the break above and having a change of character above this high. Once we have a 1 hour time frame, 2 candle closing above this high, it will be a change of character in 1 hour time frame again, and price will be back bullish. In that case, we can target this high as a new one target, and after that 1.618 is our final target. So this will be our final target around 3713. Now let's see a daily time frame targets according to Fib. According to Fib, our daily time frame target is around
3,757. So the price which can give us the same target in smaller time frame will be nearer about this retracement. Let me explain this. So we'll remove this all, we don't need it right now. Currently price is in retracement mode and this is our final target according to daily time frame. So we should watch for the retracement areas which is near that one. So if we see this, our green zone which we have plotted according to our daily time frame, which is our daily time frame order block, is directly aligned with our 30-minute time frame retracement area, and the target will be same here around 1.6 at 3,758. So this green area, the order block, will be the very much important area for a long opportunity again, and we can target 3,700 easily from this zone. Now again we have a look in weekly time frame. As you can see, this weekly time frame have closed a previous week high. That means these zones are delayed. Price will take time to test these zones here. It will not test here. Once we have a liquidity hunt below this area of 3,579, we can expect price to continue from here. Price don't need to test these areas now. It can pump from here after liquidity hunt. If price closed, if this week was closed below this 3,600, then I was expecting price to test these areas, but we have a closing above 3,600. But in daily time frame it is still bearish, so we can expect some retracement and this test of this order block. So I'm expecting price to some retracement, and after that we will buy it for swing entries. Now this is all I have for gold in this week, and next week we have FOMC. If we talk about fundamental sessions, then next week we have FOMC, and if you look it, then you can clearly see that there are 90% chance that Fed will cut the rate, and according to that big players are positioning themselves. You can see this, they are adding long. This is the previous week COT reports. They have already added more long, around 9,000 plus positions, and before that on 2nd September we have 40,000 longs added. Now let's see, this is our 2nd September is here. Here on the breakout they have added 40,000 long positions, and on the 9th of the September, which is around here, they have cut their short positions on this drop and added more 9,000 positions in long side. So they are positioning themselves for again a more new ATH around 3,700 plus. It is possible that price can go above that target, and I'm still expecting price to test these areas. Gold is still bullish in weekly time frame, daily time frame, and 4-hour time frame. In smaller time frame it is just showing a retracement. So don't try to short this top. Wait for some confirmation. It will be very good if we get a retracement, then it will be very good entry for a new ATH formations. So this is all for gold. If you have any questions, you can ask me. I will try to resolve it. I'm coming to your comment sessions.
Hello, hello, hello everyone. Hello. Don't you guys have any questions? How to keep your eyes on charts all day? You don't need to keep your eyes all day on the chart. You just need to put some alerts. You will have your alerts at the targets and prices. If you are using some premium versions of TradingView, then you will get alerts. So the OB is current POI. Yes, that order block is our current POI. Do you only analyze gold? Yes, brother. I mostly trade in gold, but I can analyze any assets. Can we short from here? For the short, I have shared two scenario, guys. You can just rewind stream and go through it. I have shared two scenario for the short entry. First is this support break, and second is this liquidity hunt. For the short, wait for this or wait for this. Thanks, Muru, for explaining. You are welcome, brother. Hello, dear. How do you see the current situation in USA? How does it affect the gold? In current situation in USA, they have already hiked their interest rate so much due to their inflation rates. Now their inflation rates are under control, so they need to cut the rate because their people are getting unemployed. So they will try to cut interest rate in order to give employments to people. That's why how this currency will get strong. Currently they are lowering the level of USD. That's why people will try to move towards gold, and the prices of gold is already showing effects of it with this massive momentum towards upside. This is my first time joining and I love this session. Thank you very much, brother. Is there any possibility of going gold back to 3300? For me, very unlikely. 4000 pending years. And see this, according to me, price will get so much difficulty breaking below the daily time frame level, which is here. Even if price break below this low, I will be watching for a buy opportunity at this level. This is very strong level. You can see this. This was around April to August. And if you see this, this is almost around 93 bars and 129 days. So this much strong resistance is now converted into support. So I'm not expecting gold below this support here. I'm still expecting price will give us a nice momentum after testing it. This is the maximum retracement area for me right now. Below this, I'm not expecting gold right now.
What are you making in kitchen? I'm not in kitchen, brother. I am in my room. Maybe you have just listened to my AC sound. It sounds too much. How to scalp in gold in 1 minute or 5 minutes, because the bigger time frame having bigger SL and patience. Just define your POIs first, and then when you have a 1 minute or 5 minute structure change at your POI, then you can enter in trades. And I have already shared so many entry models in free live sessions. You can go through it and you will have some good scalp entries in smaller time frame too. How do you think the opening will be on Sunday night? I'm expecting price to give us a small hike around the previous one. If you see this, we have too much liquidity pending here. So it is possible that we will get a liquidity hunt above this high, or a maximum wick towards this zone, then retest. Price will continue to go upside after this drop here. How to be confident before taking trades? For the confidence, you need to backtest your strategy. If you have a backtested strategy, if you have a trade entries which you have already seen so many times in the market that you can trust, then you will have confidence in your trades. सर डेली में शूटिंग स्टार बन रहा है तो वो बियरिश जा सकता है क्या? Already we are saying that daily is bearish and we are expecting it to sweep this daily time frame low around this 3579. Do you save your live session for us to refer back to? Yes, it is saved, and you can see all the live sessions in my live session. Sir, daily में shooting star. Okay, yes. What strategy do you use? Expect price action. I am using just a price action, nothing else, brother. There is nothing. This is just a market structure and price action. Sometimes I get help from this RSI. If price test around my zones and I'm having a diversion in RSI, then I can enter in trades easily. See this? See this? This was the POI. At the POI, you have this diversion. So it is really good entry. What percentage should we take a risk in two-step funded account? 0.05. Don't go above it. So let me explain you, not 0.05, sorry, it is 0.5. If you are having funded account of, let me suppose, a $10,000, okay? Then your drawdown, maximum drawdown will be around 1,000. So this is your main currency. When you lose it, you will lose your funding account. So most people will think then we can trade this for $100 SL. Then you will get only 10 trades here. For $100 trade SL, you will get 10 trade. I will suggest you to go for $50 SL. You will get 20 trades.
and go for a 1 Gen 3 trades. What will you get? After 20 trades, if you are having let me see, 50% accuracy, then on 20 trades, what will you get? With 50 of 1 Gem 3. So you will get 50 trades into 10 trades, which is your profitable. This will be your loss. So $500 is your maximum loss here, which will be around 50% here. And in one trade, you are getting $150. And 10 trade will be your in profit. So it will be around $1,500. So if you minus this, you will still get a $1,000 as a profit. And I think you need only $800 to clear this account. Am I right? Which technique you follow for trading? I am using structure and price action, guys. Where is the next tradable area in BTC? In BTC, I am watching. Let me just show you. I am watching for this zone here, around 114.6K. This one. You can enter in long from here with the stop loss just below it, and your target will be this high. It will be around 3.4 RR. सर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रेड कैसे लेते हो? डू यू सी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? I mostly see a change of character in smaller time frame at bigger time frame. POI. What is your accuracy and what should be the person's accuracy? My accuracy is around 70%. I'm not much higher than that. I'm expecting maybe around 70 to 80%, not more than it. The RR is more important thing for sure. Yes, risk reward is the main thing you should be watching for before entering any trade. Do you think it can go to 3300 again? I'm not expecting price below this low right now. This is a maximum retracement area for now, around 3448 to 3430. This is my maximum retracement expectation right now in gold. Okay, if you guys have ever seen a parabolic move, let me show you how parabolic move looks. There is a pattern which is called a parabolic move. In that pattern, price pumps spontaneously in a curve model like this one. Okay, it will have a 4 structural zones. First will be here. Price will consolidate. Then second will be near about it. Then third will be again near about it.
and this level is the most important level in this parabolic curve. From this point price can go twice. There will be another consolidation and pump, then we have a double top and price will fall. So on the parabolic move there will be a 4 stages. The third stage which have the highest potential to pump the price, and from here price can go 2x from here. And the last one, the last pump will be the considered as a exit liquidity. This will be a exit liquidity. And if you see this in gold, you will clearly see it is happening right now. At here. Let me just find a perfect curve. I need one which tests the most areas. Why it is too much taking? Okay, this one. See this? If you count it over here, you will see this is our first, this is our second consolidation, this can be our nearly about third and fourth. This is consolidation. This is third, from where we have this spontaneous move. See this? We can clearly see a spontaneous move towards upside. When price will create a double top formation and break below this curve, price can drop massively. Before that, we are still expecting upside momentum. And you can see this in yearly time frame. According to yearly time frame, what is our target? If we use Fib extension mode, this is your final target for pump, 3746. So price is near about its final target zone according to yearly time frame, and its rally is about to end here. So I will be very much careful at these zones. Still it can go up, but I will be very careful over here. Suppose if you have a trading capital of 100k, so do you deposit all of it into brokers or trade with by putting some parts of it into a broker? If you are having 100k, then you should be trading with around 30% of it. Don't put your all the eggs in one basket. Are there any market condition that you avoid? I avoid ranging market. How old are you, Trader Muru? I am asking this question for myself every time you are on our MBA. What is this MBA? I don't know. I'm 30 years old. Please explain structure-based trading technique. Structure-based trading technique is simple, brother. You are just watching for long in
uptrend market and you will be watching for short in downtrend market. Watch for the price. It is, if it is making a higher highs and higher lows, or higher highs, lower lows, lower high and lower lows. If you are seeing this kind of structure, you will be watching for short, and if you see a uptrend, then you will be watching for long. This is all a structure based trading. There are some rules, there are some areas from where you take trades, and it is very much deep in sessions, guys. I can't explain this one session. How to be like you, accurate and disciplined? I am not accurate, I am just disciplined. I trade my own areas. I avoid trading even if I have a complete structure or in between structure. I just avoid it. I trade my areas only. I have already told you guys on the CPI session, when price broke this high, I was in short from here. When price broke this high, I already told you guys that price will test this area. That I have waited for this area for a short entry, and after that, when you get your POI hit, you will be watching for a entry here. After that, you can see this. I have clearly seen a change of character in 1 minute time frame, and again a break of structure. See this, how clear is structure here. Again the break of structure. So this is all your short zone. Whenever market tests it, you can short again, and I have entered in short from here. You can see this, how clear is structure here. When you get a trading plan, you will be disciplined by yourself. How to backtest the market? Just sit on the chair, guys. Sit in front of chart and you will analyze market. Just see what is market doing at several areas. Is it repeating itself or any pattern? If it have any similarity between this previous patterns and how it was played before and how it is playing now, that's how you backtest it. Sorry, if you have 2 or 3 highs, which one to follow as you mention your sell entry? If you are having so many highs here, then it will be inducement entries. This will be your inducement. Watch for bigger time frame. See this, how messy was this in 1 minute time frame, but how clear is this in 15 minute time frame. See this area, how clear is this. You go for a higher time frame. If you don't understand a smaller time frame structure, just go for higher time frame and see what is there present which is resisting or giving support to any areas or price here. Like how often do you backtest? I backtest my strategy every weekend. Will you save this
video on YouTube, I will watch this again and again. It will be always be saved. You can find it in our live sections. What is your win rate? Do you always aim for 1 gem 3? My win rate is around 60 or 70%, and I mostly aim for 1 gem 5 or more, because my entries are very much smaller here. That's why I'm getting more often a break even. Sometimes I get a stop loss too, but more accurately, whenever I get my entry and my structure is right, then I will get around 1.5 to 1 gem 10 too. How you find your daily bias correctly? Just watch daily time frame, brother. Price will say itself that where is it is going. You can find it every day. Sir, you have not answered my questions above. Sorry, brother. I haven't seen your questions. You can repeat it. I will answer. You can't. Why can't you give us a daily 1 or 2 proper signal in free group? I give you just options and POIs. From there you should be very much careful and you can trade over there. How do you handle SL? SL is SL. What to handle in it? Nobody is right 100% in, guys. Nobody is 100% perfect in this market. That's why we have stop loss. That's why we have invalidation. If I'm having a stop loss here, if I'm going long on the flip of this zone here, and this will be my stop loss. If it is hit, then it is my loss here, and I will accept it. Don't avoid stop loss. Stop loss is the most important thing in the trading. It will save your full portfolio. What do you do apart from trading? I am full-time trader, brother. I don't have anything apart from it. What is confirmation on your POI? There are many confirmation like candlestick patterns or the structure changes and smaller time frame POIs. Everything is included in my confirmations at my POI. Man, are you married? Now I am single, brother. Did you ever revenge trade? No, I just aim for 1 to 2 trades a day. If I have my targets, then I'm okay. I mostly trade for around 100 pips to 200 pips. If I'm getting my targeted pips in my trading session, then it is okay. I will be then trading for just with a very much little capital and maybe not trading too. Most of the time you have seen my trades. I am taking some partial at 100 pips and then I will set my stop loss at break even. Why? Because at that 100 pip I have already done my daily target, which will be around my 1 to 2% of my portfolio. At least give us one proper trade, a signal that you can learn from how you enter in and take a signal with a chart and learn. I will try. Just let market come to its main POI. I'm expecting a good momentum from these areas. I'm just waiting for it. If market comes here, I will give you a good trade. I will try to give you a swing entry. How long did it take to become a full-time trader? It took me around 3 years. Do you have a copy trading? Love to follow your trades. I don't have copy trading right now.
And this is why the reasons are concentrating on charts. Married people cannot remain in stress. It's true. Activities apart from trading like gym, meditation, or the things which helps you stay calm and positive. अरे भाई बहुत बहुत ख़राब कर लिए हेल्थ, और कुछ नहीं अभी. Are you trading from India? How you trade from India? Most of the people are here are Indians and Pakistanis. So let me talk in Hindi right now. Okay. सो इंडिया में ट्रेड करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए भाई. आपके पास ऑलरेडी अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट है एक्सएनएस का तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी एक्सएनएस के अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं सारे के सारे अमाउंट मैं खुद अपनी कैश में ले रहा हूँ. कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन मत करो, आपको कैश मिल सकता है बाहर. एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग कुछ नहीं है. शायद कभी कभी तो हफ्ते में एक आध बार मैं अगर धूप देख लेता हूँ तो वो भी बहुत मेरे लिए. When you sit too much in front of chart, it will affect your health and your mental health too. So don't just be a couch potato, guys. Muru, I want to join you, but this is from your share is very, very difficult to understand. What is share? I don't know. Thank you very much for your answer. Appreciated. P2P is good. कभी P2P मत करना, बैंक के स्कैम होते हैं. P2P अगर आप करना चाहते हो एक्सचेंज से P2P मत करना, OTC यूज़ करो. उसके लिए आंगड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में. अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे आपको कैश मिले तो OTC से अच्छी कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में. और अगर आप P2P यूज़ करते हो तो मेरे खुद के 5 लाख अभी भी होल्ड है बैंक में. क्योंकि वो क्या होता है कि साइबर क्राइम वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं, वो याद रखना आप. P2P मत करो. How to find supply and demand? It is simple, guys. If you are having multiple rejection, this is your supply. If you are having a multiple rejection from one zone, this is your demand. You are having multiple rejection from the same zone, this is your supply. Watch for the maximum and multiple rejections from same zone. That will be your supply and demand. Once demand is flipped, it converted into supply. Once supply is flipped, it will convert it into demand. That's it. Nothing is difficult in it. How to find? भाई कैश कैसे मिलेगा? Please throw some light. अगर आपको कैश चाहिए तो आपके पास कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए जो आपको USDT के बदले आपको कैश प्रोवाइड करे, और आप उससे आंगड़िया में पेमेंट ले सकते हो अगर आप चाहो तो. इट विल बी रिस्की इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर प्रोसीजर. डोंट गो फॉर इट. जस्ट आप अगर किसी अच्छे बंदे को जानते हो जिसको ऑलरेडी जेन्यून पर्सन है तो उसके साथ आप डील कर सकते हो, वरना डील मत करो. पहले ही बता रहा हूँ, इट विल बी वेरी मच रिस्की. What is OTC? OTC is over the counter where you give USDT or some coins like Bitcoin and you will get your money in hand as a cash. Where to find OTC? OTC is already available all over India. You can. It is just underground method. So you need to have so many connection for it.
भाई FIA ले जाएगी? कौन है ये FIA भाई? कोई नहीं ले जाएगा। I just P2P yesterday फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्या होता है P2P में। अगर आप P2P कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ की साइबर क्राइम में जो भी कंप्लेंट्स आती है वो क्या आती है कि इनकी बैंक के अकाउंट में मेरा पैसा आया है, जो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने इसको क्यों दिया है, और USDT वो सब इलीगल है इंडिया में। सो आप अगर P2P से भी कोई भी पेमेंट ले रहे हो तो वो बंदा आप पे केस कर सकता है कि इस बंदे ने मेरे पास से पैसे फ्रॉड करके लिए हैं। तो बैंक में कभी भी पेमेंट मत लो अगर आपके पास कोई भी इसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल ना हो तो। मेरे एक दोस्त ने P2P किया था और अराउंड उसके 5 लाख रुपए अभी भी होल्ड है। साइबर क्राइम वालों ने उसका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज कर दिया है और वो अभी नहीं छोड़ रहे हैं। Sir, I think you have not interested in my answer. Please repeat your question, brother. I will try to answer it. 3000 से 3446 and now this is level is broken. Do you think 46 plus 400? Brother, I have already told you guys, पूरी की पूरी मैंने डिटेल बता दी है कि मैं गोल्ड को कहाँ देख रहा हूँ। इसके नीचे मुझे गोल्ड अभी नहीं दिख रहा है, और अगर रिट्रेसमेंट होती भी है तो बाइंग देखो यहाँ से, इसके नीचे अभी मुझे गोल्ड नहीं दिख रहा। अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस आएगी। I am willing to join your trading classes, but I do not have $300. Can you give me a discount? This is a discounted price, brother. Previously it was $500. BTC के बारे में बताएं। BTC की बात हमने पहले ही कर ली है भाई कि वो नीचे आके इन एरियाज़ के पास से वापस जा सकता है। 1 आवर इसका बुलिश है, तो आप इन एरियाज़ के पास उसको बाइंग देखो। 1,14,600 से लेके 1,14,100 तक ये एक एरिया है, यहाँ पे बाइंग देख सकते हो आप। कैन वी गेट जेल फॉर P2P ट्रांसफ़र? यस। और कोई क्वेश्चन हो? Sir, any chance of market opening with gap up or gap down? Please, what is your thought about it? Tell me. Listen, brother, there it is not possible to analyze the gap up and gap down market. I am just watching right now that this is resistance and this is support. If price break below it, I will short it. If price break above it, I will long it. Just nothing. I am just watching market. I don't trade market gaps. How to stay calm during trades? If you know the outcome already, if you have already accepted what is happening in the market, you will be always be calm. ओके, तो सबको हिंदी आती है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सुनिए, अगर आपको पता है कि आपके पास
ये $10,000 पड़े हुए हैं। आप हर ट्रेड में $100 का रिस्क ले रहे हैं। आपके पास 100 ट्रेड पड़े हैं और आपको पता है कि आपने ये ट्रेड ली है और उसमें आपने $100 का रिस्क लिया है, मतलब आपके $100 चले गए। यही सोच लो, पहले ही सोच लो कि आपने ऑलरेडी मार्केट को $100 दे दिए हैं। तब आपको उस ट्रेड के बारे में कोई भी इमोशन नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया है, यहाँ पे सपोज मार्केट इज गोइंग ऑन योर साइड, इट इज गुड, you have 1 gem 3, you got $300, okay, it is good, but suppose मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और आपका एसएल हिट होने वाला है। अगर आप इस एसएल को एक्सटेंड कर रहे हो या फिर आपने एसएल हटा दिया तो वो चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। पॉसिबल है कि आपका अकाउंट भी ब्लो कर दे। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा ये हो गया, वो हो गया। कई लोग तो यहाँ 3300 से शॉर्ट में बैठे हुए हैं। 3300 मतलब आप सोच रहे हो कहाँ से? इन एरियाज से, यहाँ से जहाँ से हम लोग बाइंग की सोच रहे थे वहाँ से वो लोग शॉर्ट में बैठे हैं। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट में बैठे भी हो, चलो मैं ये सोच भी लेता हूँ, तो फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ना, कम से कम यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन एरियाज़ को अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो आप अपने शॉर्ट क्यों क्लोज नहीं कर रहे हो? जितना ज़्यादा आप अपने लूजिंग ट्रेड को पालते पोसते रहोगे वो उतना ज़्यादा ही दर्द देगा आपको। सीधी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लो, इनवैलिडेशन रखो, इनवैलिडेशन हिट हो जाए, बाद में ट्रेड से आउट, फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी। हाउ टू अवॉइड अर्ली प्रॉफिट बुकिंग। अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कब होगी? जब आपको अपने खुद के ट्रेड पे भरोसा नहीं होगा और आप जब अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे। सोच लो अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, मतलब आपने 300 पिप का एसएल रखा है और आपका टारगेट रहेगा ये अराउंड 2000 पिप का, तो ये कोई रियलिस्टिक टारगेट नहीं हुआ। अभी के लिए ये कोई रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। हमको पता है कि मैक्सिमम अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो 1 जेम 1 या 1 जेम 3 पे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा एग्जिट नहीं कर रहे हो, शॉर्ट में कभी भी, मेरी अगर मानो ना, तो शॉर्ट में कभी भी ट्रेड होल्ड मत करो। आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। यहाँ की लॉन्ग अगर आपने होल्ड की है तो देखो फिर क्या है। जो लोग यहाँ से लॉन्ग में एंटर है या यहाँ से भी लॉन्ग में अगर एंटर है, उन्होंने अपनी ट्रेड होल्ड की है तो उनको अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है। पर जो लोग यहाँ से शॉर्ट में बैठे थे, अगर उन्होंने अपनी ट्रेड होल्ड की है तो उनको ज़्यादा, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहाँ तक लो तक गोल्ड ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा ना। मार्केट में आपने कभी देखा है कोई भी इतनी असेट क्लास चीज़ अगर एकदम से ज़ीरो हो जाए, रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा यहाँ पे? सिंपल भाषा में अगर आपको दिखाऊं, सोच लो अगर गोल्ड का प्राइस अभी $100 चल रहा है, आपने यहां से एक लॉट शॉर्ट किया है, तो फिर अब सोचो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, गोल्ड कितना ऊपर जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे, यहाँ पे गोल्ड हमारे पास पड़ा है अभी 3600 तक। आपने यहाँ पे बिना एसएल के एक लॉट शॉर्ट किया है $100 पे, और आपने यहाँ पे अगर सेम चीज़ अगर आप लॉन्ग में देखो, 1 लॉट लॉन्ग में आप बैठे हो $100 से और प्राइस अभी है यहाँ पे 3600 पे, कितना प्रॉफिट होगा? अब रिस्क रिवार्ड सोचो क्या है। आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे था, अगर मैं गिन लूँ 10,000, $1,00,000 का गिन लो, चलो ना। ये क्या मैं कर रहा हूँ?
तो शॉर्ट में अगर गोल्ड यहां से जीरो तक चला गया, $100 से जीरो तक चला गया, तब आपका पोर्टफोलियो डबल होगा। पर लॉन्ग में कहां पे होगा अभी पोर्टफोलियो? मैक्सिमम शॉर्ट में आपका पोर्टफोलियो डबल हो सकता है, पर लॉन्ग में कितना बनेगा? यहां पे देखो कितना बनाइए, 36 गुना तो अभी भी मुझे दिख रहा है, देख रहे हो? तो लॉन्ग और शॉर्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको लॉन्ग देगा, शॉर्ट नहीं। शॉर्ट में कभी भी आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इतना। ये सिंपल सी चीज़ है, कभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कुछ हार्ड नहीं है, मार्केट बहुत इजी है। Big players always win because they try to enter in market and hold. This is the point. From where I'm telling you to buy here. Look at this. This is $200. See this? So in long you can hold your trades. If someone have, यहाँ पे देखो, ये देखो, सोच लो अगर किसी बंदे ने यहाँ से लॉन्ग किया है इस एरिया से, उसका लॉन्ग हो गया यहाँ से, गलती से उसने यहाँ पे 1900 पे लॉन्ग कर दिया, वो भी कहाँ? 2011 में। मार्केट गिरती रही, कोई बात नहीं, गिरती रही, मार्केट पहुंची यहाँ पे 1000, मतलब उसका पोर्टफोलियो का 50% यहाँ पे चला गया। अब यही सोच लो यहाँ पे किसी बंदे ने शॉर्ट कर लिया है, समझ रहे हो? लॉन्ग वाले बंदे की एंट्री यहाँ पे वापस आ गई है और वो एग्जिट भी हो चुका है मार्केट से। अगर वो एग्जिट नहीं होता तो उसको प्रॉफिट भी हो चुका है ऑलरेडी, पर शॉर्ट वाले बंदे की एंट्री वापस नहीं आई है अब तक। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये सिंपल सी चीज़ है। मार्केट में अगर आप टिकना चाहते हो तो एसेट कौन सी आप यूज़ कर रहे हो, एसेट का सिनारियो क्या है, वो क्या कर सकती है, उसका पोटेंशियल क्या है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप उसमें अच्छे से खेल सकते हो। How do you use fixed range volume profile? I don't use it much. Sir, what is your suggestion? How much we use lot size in $300 अकाउंट? अगर आप अरे सिंपल सी चीज़ है यार, आप कोई भी अकाउंट साइज ले लो, उसके 1% का रिस्क लो। आपका चाहे अकाउंट $100 का हो, $1000 का हो, या फिर $10 का हो, आपका रिस्क होना चाहिए 1%। यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा $10, यहाँ पे $1, यहाँ पे कितना रहेगा? 0.1। सेंट अकाउंट खोल लो अगर ये करना हो तो। ट्रेडिंग कोई टेक्निकल गेम नहीं है, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप इसको समझ रहे हो परफेक्टली, अगर आप इसको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग खेलोगे, आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। अब इस मार्केट में कौन खरीदेगा ये सोचो। लोग यहाँ पे भी बाय कर रहे हैं अभी भी,
अभी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर रही है, ये सोचो उनको क्या दिख रहा है यहाँ से। What was your initial capital in trading? When I have started my trading career, my initial capital was $100. Okay guys, any other questions? आशा करता हूँ आप सबको ये साइकोलॉजिकल बातें समझ में आई हो। कभी भी अपने स्टॉप लॉस को मूव मत करो। कोई भी ट्रेड में एंट्रीज लेने से पहले स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइन करो और आपका टारगेट भी डिफाइन होना चाहिए। 1 जन 3 लो, एग्जिट करो मार्केट से, 100 पे मिल जाए डेली के बहुत है। जो लोग बड़े बड़े टारगेट रखते हैं ना, अरे मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा और यहाँ तक आने दो, मार्केट को 3600 तक जाने दो या 3000 जाने दो वापस, अनरियलिस्टिक टारगेट रखते, उन लोगों के टीपी कभी हिट नहीं होते। वो लोग स्टॉप लॉस हिट करवाते या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर पूरा अकाउंट ही ब्लो करते हैं। Hello, if the daily candle was not closed below for 3646, what can happen? अगर डेली कैंडल 3646 के नीचे क्लोज ना होती तो क्या होता, यही पूछ रहे हो ना आप। तो फिर ये होता कि हमारे पास एक नई रेंज बन जाती। ये देखो, ये है हमारा 3646। तो फिर क्या होता, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाती तो ये बन जाती हमारी नई रेंज और मार्केट इसके टेस्ट पे हमको न्यू हाई दे देती। यहाँ पे अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो मार्केट सिंपली इसको टेस्ट करके हमको न्यू हाई दे देती। क्लियरली बुलिश हो जाता ये नेक्स्ट वीक के लिए। पर ये अभी हुआ नहीं है, इसलिए अभी भी ये बियरिश ही है। और कोई क्वेश्चंस? चलो एक सिंपल क्रैश कोर्स करवा देता हूँ आप लोगों को। जो कैंडल रेंज थियरी में अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, उसका क्रैश कोर्स कर लेते हैं। चलो आज मज़ा आएगा शायद। हेलो, आवाज़ आ रही है?
आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरी, मुझे भी नहीं पता, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सीआरटी में क्या होता है, हम लोग हर कैंडल को एक रेंज की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई हमें एक रेंज दिख रही है, कैंडल दिख रही है, तो उसका हाई और उसका लो, वो दोनों हमारे लिए एक रेंज है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेंज। अगर इस रेंज के ऊपर हमें सिर्फ विक मिले, फेक आउट मिले, वापस अंदर क्लोजिंग आ जाए, तो इसके नीचे तक हम वापस मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर मार्केट इसके नीचे अगर फेक आउट करके वापस अंदर क्लोज हो जाए और रीटेस्ट करे, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो बेसिकली ये एक रेंज होती है कैंडल में, जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो वो रेंज एक्सटेंड हो जाती है हमारी। सपोज हमें यहाँ पे एक और कैंडल मिली जिसने क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर ऐसे, ये उसका हाई और ये रहा उसका लो, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी हाई और ये हो जाएगी हमारी लो। ये पूरी की पूरी रेंज की ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये रेंज अब इनवैलिड है और ये है हमारी नई रेंज। इसके नीचे अगर फेक आउट आता है, वापस से मार्केट अंदर क्लोज होता है, तो ये नेक्स्ट मूव होगा। और सेम चीज़ अगर इसके ऊपर से हमें कोई फेक आउट मिल रहा है, वापस से मार्केट अंदर आ रहा है, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट मूव। मार्केट हमेशा एक तरफ की लिक्विडिटी के बाद दूसरी तरफ की लिक्विडिटी लेने जाएगा। पूरी की पूरी इस कैंडल को ही हम रेंज मानेंगे। ये होता है रेंज लिक्विडिटी। रेंज में टॉप और बॉटम दोनों ही लिक्विडिटी तक काम करते हैं। अगर आप इसको लाइव मार्केट में अगर देखोगे ना, आपको पूरी तरह से पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में ये कैंडल का हाई गया, ये हमारा सबसे हाई कैंडल था, ये रहा हमारा लो। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, बस इसकी लिक्विडिटी गई है। तो बाद में क्या करेगी मार्केट, उसको रीटेस्ट करेगी और इस डाउन को, उसको ये जो है ना डाउन साइड हमारा लो, इसको टारगेट करेगी एज अ टारगेट। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसके ऊपर, जो इसकी लिक्विडिटी हंट हुई है, आपका टारगेट रहेगा ये। हो गया आपका ये पूरा ट्रेड। सेम चीज़ यहाँ पे अगर क्लोजिंग हुई, मतलब हमारी नई रेंज क्या बन गई, अब ये कैंडल बन गई हमारी पूरी की पूरी नई रेंज। अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट को हम इसके अंदर ही देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाने पड़ेगा इससे छोटे टाइम फ्रेम में, जाते हैं 4 आवर में। फोर आवर में हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ये थी हमारी लास्ट रेंज। लास्ट रेंज में ये कैंडल पड़ी थी हमारे पास जो ऊपर गई थी, मतलब अभी तक बुलिश है मार्केट। ये रही उसकी लास्ट, ये रही एक और, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, मतलब ये बन गई हमारी लास्ट कैंडल। ये रही हमारी रेंज। इसके नीचे कैंडल क्लोज होते ही ये पूरी की पूरी रेंज ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब मार्केट नीचे की तरफ की ओर मोमेंटम देगा, जो अकॉर्डिंग टू रहेगा डेली टाइम फ्रेम। आपको छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, पर ये बड़े टाइम फ्रेम में पूरी की पूरी एक सिंगल वेव ही रहेगी, एक कैंडल ही रहेगी। देख रहे हो आप, मार्केट कुछ नहीं करता, सिर्फ एक तरफ की लिक्विडिटी लेके दूसरी तरफ उसको डिलीवर करता है। ये देखो,
यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ये बन गई हमारी पूरी की पूरी रेंज। जब तक इसके अंदर मार्केट है ये पूरी की पूरी रेंज मार्केट है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुई है तो ये बन गया पूरा बुलिश मार्केट। अब मार्केट इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है। ये हमारी नई रेंज बनी है, मार्केट इसको क्लोज करेगा, वापस से ऊपर जाएगा। एक और बन रही है, देखो हर बार हाई क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हाई क्लोज नहीं हुआ तो वेट करेंगे। अगर बुलिश जा रही है तो ठीक है, अगर यहाँ पे हमें वापस क्लोजिंग मिल गई है, ये बन गई हमारी एक और रेंज। लिक्विडिटी बनी, यहाँ पे स्वीप हो गई, ये इसने स्वीप की थी, इसकी लिक्विडिटी अब स्वीप हुई। ये दोनों एक ही कैंडल है, इसने वापस क्लोजिंग की। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये दोनों एक ही कैंडल दिखेगी। इसके बाद की पूरी रेंज ये है, इसके नीचे लिक्विडिटी गई, मार्केट वापस ऊपर क्लोजिंग गई, एक और क्लोजिंग। देख रहे हो हर बार नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रही, अब सिर्फ लिक्विडिटी जाएगी और कैंडल ऊपर क्लोज होगी। देख रहे हो, बाद में ये बनी हमारी एक और रेंज। इसके ऊपर और नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती मार्केट का कोई अभी डिसीजन नहीं आया। ये पूरी की पूरी अब रेंज मार्केट है। अब मार्केट यहाँ से अगर बाय जा रही है तो यहाँ पे हमें एक सिनारियो मिल गया कि मार्केट अब न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगी। देख रहे हो, तो ये बन गई हमारी न्यू रेंज। ये यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा न्यू रेंज। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ये पूरी जो फर्स्ट कैंडल होती है ये होती है डिमांड। यहाँ से मार्केट वापस जंप कर सकती है। और देखो बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई ब्रेक, एक और हाई ब्रेक, एक और हाई ब्रेक। देख रहे हो, तो अभी भी ये बुलिश ही है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, एक कैंडल ब्रेक नहीं होती, तब तक ये पूरा मार्केट बुलिश है। अगर नीचे क्लोजिंग हो भी गई तो फिर क्या होगा, मार्केट प्रीवियस रेंज को रीटेस्ट करने आएगी। प्रीवियस रेंज कहाँ पे है इसकी, ये है। और ये इस रेंज को आपको दिखेगी ये मंथली में, दिख रहे हो। मंथली में आपको ये दिखेगी कि ये एक पूरी रेंज थी जिसके अंदर मार्केट घूम रही थी। एक ही कैंडल है ना पूरी, कितनी सारी कैंडल थी इसके बीच में, पर ये अभी भी पूरी एक ही कैंडल है मंथली में। और ये रहेगी इसकी डिमांड। अगर ये मंथली इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर क्या होगा ये सोच लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये पूरी की पूरी एक डिमांड बनेगी। सेम चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करो। अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आ रही है तो बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, वरना छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये पूरी की पूरी कैंडल दिखी जाएगी। ये देखो, ये 4 आवर में जाते हैं, मार्केट यहाँ पे गई, उससे पहले देखो क्या कर रही थी ये, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, रेंज वापस ऊपर ब्रेक हुई, ऊपर ब्रेक, एक और यहाँ पे देखो एक और लो ब्रेक नहीं हुआ, एक और ये रहा हमारा फाइनल जोन, जिसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद मार्केट बियरिश हो गया। देख लो, जब मार्केट अपनी कैंडल्स की रेंज ब्रेक करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अपना मोमेंटम चेंज करता है। ये होती है रेंज थियरीज। देख रहे हो, बाद में ये 4 आवर में तो 2 कैंडल दिख रही है ना,
पर इसका लो और इसका हाई डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ और ही दिखेगा। देखो क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम की ये रेंज है जिसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, सेम रेंज है पर इसका हाई ये है। तो ये है हमारी करंट रेंज। मार्केट को बियरिश जाने के लिए इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3579 के नीचे, तब जाके ये बियरिश होगा। उससे पहले सिर्फ लिक्विडिटी हंट करके वापस ऊपर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम तो यही बता रहा है कि सिर्फ लिक्विडिटी हंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ की सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी है, और मार्केट नीचे की तरफ की लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश करेगी। और ये पड़ी है यहाँ पे हमारे पास डिमांड, जो इस रेंज के ब्रेक के बाद था। समझ में आया कुछ, या फिर कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया? काफ़ी डिले ले रही है मेरी आवाज़ पहुंचने में, रिकॉर्डिंग और Can you turn the subtitle feature, sir? Subtitle feature is already on, brother. I don't know why it is not working. It is already on. I'm getting your message too late, so if it is taking time, so don't get furious, guys. It will take time to get upload here. Sir, what is your biggest loss in trading? Please tell. Around $3,000. So any other questions, or we should wind up this session here? Okay, I think this is enough for today. We will wind up this session here. Thank you for joining. See you in the next sessions. Thank you all for joining, guys. I am just winding up the session over here. See you in the next session. Until then, keep trading, keep printing.